हेलो एवरीवन, माय नेम इज योगेश भंडारी एंड आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी मोर अबाउट इंटरनेशनल टैक्सेशन. So my today's topic is divided into four parts. Number one, to give you gist or summary about international taxation. Number two, I will directly show you the double taxation avoidance agreement. Number three, we will discuss about the case law depending on the double taxation avoidance agreement. And number four, we will conclude. So to start with international taxation, सो वी ऑल नो दैट हमारे जो इंडियन इनकम रहते हैं या इंडियन एंटिटी रहते हैं उनको तो हम इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स लगा देते हैं. बट ऐसे बहुत से पेमेंट होते हैं जो हमें आउट ऑफ इंडिया करना पड़ता है व्हेन वी आर डूइंग सम इम्पोर्ट ऑफ एनी गुड्स और वी आर इवन अवेलिंग सम सर्विसेज आउटसाइड इंडिया. सो वी हैव टू मेक पेमेंट. तो ऐसे सब पेमेंट का क्या, वेदर इट विल बी चार्ज टू टैक्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इज नॉर्मली द क्वेश्चन बीन एड्रेस्ड. सो ऐसे केसेस पे अगर इंडिया ने भी डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे टैक्स लगाएंगे, या बाहर की कंट्री से हमको पैसा आ रहा है उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वहाँ पे भी टैक्स लगाएंगे और यहाँ पे भी टैक्स लग रहा है, तो ये हार्डशिप हो जाता है फॉर एनी वन हु इज इन टू ट्रेड. तो ऐसे सब केस में कंट्री टू कंट्री गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि दे आर गोइंग टू एंटर इन टू अग्रीमेंट टू अवॉइड दिस डबल टैक्सेशन का सिचुएशन. एंड ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट को ही डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट बोला जाता है. और ये अग्रीमेंट में बहुत से इनकम उन्होंने क्लासीफाई किए. से फॉर एग्जांपल बिजनेस इनकम, रॉयल्टी, टेक्निकल सर्विस, इंटरेस्ट, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विस और वॉट एवर. ऑल दो सर्विसेज आर बीन डिफाइंड एंड वो सर्विसेज पे उन्होंने टैक्स कैसे किधर कौन से सर्कमस्टेंसेस पे लगेंगे वो लिख रखा है. एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट ये सारे एग्रीमेंट का बेनिफिट आपको या फिर फॉरेन कंट्री के रेसिडेंट्स को कब मिलेगा, जब उन्होंने अपने कंट्री से एक सर्टिफिकेट लाया गया है जिसका नाम है टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट. अगर उनकी कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो अगर ये लिख के दे रहा है कि यस दिस पर्टिकुलर कंपनी विथ होम देर इज अ ट्रेड, ये हमारे कंट्री का ही रेसिडेंट है और ये सर्टिफिकेट इंडियन गवर्नमेंट के पास आ गया या इंडियन एंटिटी के पास आ गया ना, देन दे कैन गिव बेनिफिट ऑफ दोज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. देयर आर अदर कंडीशंस आल्सो बट ब्रॉडली ये कंडीशन है जो मोस्ट ऑफ द अग्रीमेंट के केसेस में होते हैं. एंड गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू agreement with a lot of countries like UK, USA, Sri Lanka, many other a lot of countries. So this is majorly about international taxation. Now I'll go into my second topic, which is about getting you into the agreement. So I'll directly show you the agreement. So this is how the agreement look. It says that agreement for avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion with United Kingdom of Britain and Northern Ireland. And there are a lot of things covered like scope of convention, tax covered, general definition, domicile, permanent establishment. Similarly, Article 13. For us today to discuss us is Article 13, that is royalty and fee for technical services. इसका मैं आपको ब्लैंकेट प्रोविजन अगर बताऊं तो यहाँ पे बोलते हैं रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज अराइजिंग इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. यू इमेजिन दैट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इज द स्टेट वेयर वी रिसाइड एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट और द स्टेट वेयर ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग एंड अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इज द प्लेस which is the foreign company's place. Okay, so royalty fee for technical arising in India and paid to resident of outside India may be taxed outside India. So normal blanket provision says that technical royalty को बाहर ही tax करो. But however, such royalty technical may also be taxed in India, in which they arise and according to the law of India. But if the beneficial जो बाहर का है बंदा foreign company is resident of other contracting state, the tax so charge shall not exceed. तो टैक्स एक लिमिट करना पड़ेगा अगर वो बाहर की कंट्री का रेसिडेंट है. तो वो बोल रहे हैं कि रेलेवेंट अभी ये है कि 15% लग जाते हैं इन पे फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे. इसके बाद अगर मैं आपको टेक्निकल सर्विसेज के डेफिनेशन के बारे में बताऊं, यहाँ पे ये क्लॉज 4 में फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के बारे में बताया गया है. ये बोल रहे हैं कि पेमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ एनी पर्सन in consideration for rendering of technical and services and consultancy services. तो important क्या है, आप कोई भी technical और consultancy services के payment कर रहे हो. And it also adds that which, so आप खाली technical consultancy service provide कर रहे हो और उसका pay कर रहे हो, नहीं, that will not amount to fee for technical services. It should also, I will take you to the relevant, make available technical knowledge, experience, skill, know-how, process, or consist of development and transfer of technical plan or technical design. So I've shown you the agreement, double taxation avoidance agreement, and now it is important to move to the third part, which is discussing the case law based on the facts that we've discussed. So a country based in UK called as Interroute Communications Limited
They are giving services to country based in India, that is Reliance and BSNL. The services that they are giving is the connectivity services. So all the calls coming from USA and Europe is being connected to the end operator, and UK company is the mediator for providing, or the connector for providing this particular services. UK company is saying that we are providing this as a standard service to many countries across the globe, and there is no human interventions involved in providing this particular services. Now, when the case has come to the income tax department, they have decided that this particular service is to be as technical nature. Now, the consequence of calling it as a technical services will lead to taxation of approximately 15%, just we've discussed, if DTA benefit has been provided, and the UK company on which the tax is being decided, they are saying that this particular services, they have provided it as a business services, and this is just a standard service that they are giving. So this is not a technical services, this should rather be called as a business income. And business income के प्रोविजन में ऐसा बोला गया है कि अगर इंडिया में आपका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का डिस्कशन हम कभी किसी और दिन करेंगे, बट इंडिया में अगर कभी कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है तो ये पर्टिकुलर इनकम जो है ये बाहर ही टैक्स होगा, इंडिया में टैक्स नहीं होगा अगर बिजनेस इनकम में डिराइव होता है। तो नाउ देयर आर टू पर्सपेक्टिव, इनकम टैक्स बोल रहा है टेक्निकल और उस पर टैक्स लगाओ, यूके वाला बोल रहा है कि भाई बिजनेस और उस पर बाहर ही टैक्स लगेगा, इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। नाउ दिस केस हैज कम टू हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने क्या बोला है? हाई कोर्ट ने ये बोला गया है कि खाली टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करना इज नॉट इनफ, बट मेकिंग अवेलेबल टेक्निकल नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल, नो हाउ और प्रोसेस is also important. So Indian company are receiving services from UK company, and it may be possible that this services is a result of use of some technology by the UK company. However, UK company has not made available any kind, या UK company ने कोई भी ऐसा technical knowledge, skills या know how या process उनको अवेलेबल किया है इंडियन कंपनी को हमेशा यूके कंपनी की जरूरत होगी। दे वोंट बी एबल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। से फॉर एग्जांपल अगर इनके पास वो टेक्निकल स्किल नो हाउ अवेलेबल होता, दे वोंट बी रिक्वायरिंग सर्विसेज फ्रॉम यूके कंपनी, रादर दे वुड डायरेक्टली be the connector and get the connectivity services from US और यूरोप के कॉल डायरेक्टली आ जाते हैं इनके पास, बट दे विल नीड सर्विसेज ऑफ यूके कंपनी हु विल बी कनेक्टर फॉर देम। सो सर्विसेज तो है बट देयर इज नो technology skills or process being made available to Indian company, and therefore this cannot be independently said as a fee for technical services, और इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के हिसाब से। यहाँ पे हाई कोर्ट ने और एक केस लॉ के बारे में डिस्कस करने बोला है। सो ये कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड का केस लॉ है, जहाँ पे बोला गया था दैट कांस्टेंट ह्यूमन एंडेवर और ह्यूमन इंटरवेंशन इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ट्रीटिंग द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज टेक्निकल if the technology or process has been put to operation automatically wherein it operates without much human interference or intervention, then such technology per se cannot be held as rendering of technical services by human skills. तो यहाँ पे ये केस लॉ का भी हेल्प लिया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि ह्यूमन इंटरवेंशंस नहीं है ना, प्योरली टेक्निकल है, ऑल प्रोसेस बीन सेट एंड ऑटोमेटिकली बीन प्रोवाइडेड, दैट विल नॉट अमाउंट टू फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। देयर हैज टू बी ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड देयर हैज टू बी some technology or some knowledge skill process being available to the recipient of services, only then it could be said as fee for technical services. And with that my today's discussion ends. Please do not consider this as a final thing for you. You talk to your consultant before making any kind of decisions. My discussion is just for education purpose and nothing else. Thank you so much.